the biggest bag ever. So, hi everyone, and welcome back to a new video. If you're seeing my face for the very first time, then hi and namaste, I'm Shreya. And this video is going to be a Janpath haul. If you have not seen my previous vlog, I will link it here. I told everyone that I recently went to Janpath and सुंदर सुंदर चीजें मैंने ली हैं, and this video is going to be all about that. So ज़्यादा time waste ना करें, let's start with the haul. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्लोथिंग से, बिकॉज बहुत ही लिमिटेड चीजें हैं जो क्लोथिंग सेक्शन से हैं. देर आर हार्डली जस्ट 3 प्रोडक्ट. उसके बाद वी विल स्टार्ट विद द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट एंड दैट इज द ज्वेलरी. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव टू शो यू इज द टॉप दैट आई एम वेयरिंग. इट इज फ्रॉम जनपथ. And oh my god, the prices that they were stating is crazy. Matlab, last week I went with my friend. They were saying 1200 or something for that, and I got it for like 350 rupees, and even she got it for the same price. So you have to bargain to that level, and it was like very crazy. We got it from the same shop and it is very pretty. You can see it's very different, and मैंने ये कहीं भी नहीं देखा है. It was again, Janpath has something new to offer every time you visit there, and it's a corsety top. You can see the detailing. It is so pretty, and I love the whole cottage core theme. मेरे को लगता है मैं काफी ways में इसे style कर सकती हूँ. I can wear it with a skirt, even jeans, and it is just perfect. So yeah, that was it. That was my first purchase. अब बात करते हैं दूसरे एक टॉप की. So this is my next purchase. You can see it's purple, it's pretty, and ये इसकी sleeves हैं. तो you get like a tie-up detailing यहाँ पे और यहाँ पे, and it's very nice. बहुत easy breezy सा है. This was not from a shop. ये बाहर जो ऐसे छोटे छोटे से stalls होते हैं उनमें से था, and I got it for like 200 rupees, which was a great deal. और इसकी prices fixed थी तो कोई bargaining नहीं करी. So if you are going and getting this, don't pay more than 200 rupees. I really like the color purple. Also, it's so flowy. ऐसे flowy सा top मेरे को बहुत अच्छा लगता है. And I think this was like very good. ऐसे summers के लिए it's perfect. So yeah. So the next thing that I got is this skirt, and you can see इसमें छोटे छोटे से घुंघरू भी लगे हुए हैं, और ये अभी तक मैंने पहना नहीं है. आई वॉज प्लानिंग टू वेयर इट ड्यूरिंग लाइक नवरात्रि, दिवाली, बट हो नहीं पाया. बट आई थिंक आई कैन वेयर इट लाइक कभी और. तो इसमें बहुत ही प्यारा ऐसे छोटा छोटा सा मिरर वर्क है, एंड आई बॉट इट फ्रॉम अ शॉप. सो अगेन दिस वॉज फॉर 350 rupees, and it's a long skirt. It's very comfortable. Under there is no kapda, so that's one thing. So it's very light, like it's very light. There is no lining inside. So that was it for the clothing section. और अब हम चलेंगे सबसे 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 ज़्यादा सुंदर चीज़ों पे, जो है jewelry. And I have some like beautiful amazing pieces to show you all, because I am obsessed with the jewelry that I got from there. So let's move on. So the first thing that I'm going to show you is this. ये जो earrings मैंने पहनी है, of course I got it from Janpath, and this was from a fixed price shop, और ये मुझे मिला 100 rupees का. and मेरे को बहुत अच्छा लगा इसका डिज़ाइन, काफ़ी यूनिक था. मैंने ऐसा कहीं देखा नहीं है, 100 rupees में तो डेफिनेटली नहीं देखा है. एंड आफ्टर सीइंग द होल मार्केट, और मार्केट में क्या मिल रहा है, चीज़ें काफ़ी ओवर प्राइस लगी थी मुझे. कुछ like kuch earrings they were just stating for like 600-700 rupees out of nowhere, and this was only for 100, and that too the prices were fixed. मेरे को लगा this is a nice purchase, so I got it. अब सेम शॉप से मैंने एक और ईयरिंग ली है. अब इसके साथ थोड़ी सी ट्रेजेडी हो गई है, but it is nice. So I got these earrings and just look at them. This is what it really looks like. और इसका ये वाला stone गिर गया. This was again for 100 rupees, but I have this white wala part, and I plan on fixing it very soon. So I think it's not like a big damage, like I can fix it. Is how it looks. Just look at this one, okay. And just see the detailing, कितना सुंदर है ये. ऐसे देख लो. So this is what it is about. So I found another like ऐसे fixed price store, और मेरे को कुछ छोटे छोटे झुमके भी लेने थे, बिकॉज मेरे पास इतने सारे बड़े बड़े इयरिंग्स हो गए हैं दैट आई जस्ट डोंट हैव नॉर्मल लुकिंग झुमकास. सो आई गॉट अ वेरी लाइक क्यूट normal झुमका.
एंड दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक एंड दिस इज़ फॉर 50 रुपीज़ और मुझे लगता है कि ये परफेक्ट है अपने प्राइस के लिए एंड अगर हम इसको ऐसे पहनते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखता है और काफ़ी है ये मतलब इट्स वेरी नॉर्मल समथिंग दैट आई नीडेड ऐसे दिखेंगे बड़े ही सुंदर सुंदर से हैं 50 रुपीज़ यू कैन सी वेरी वेरी क्यूट वेरी वेरी सुंदर एंड दिस ऑल्सो 50 रुपीज़ अब आते हैं नेक्स्ट ईयरिंग के अब आते हैं नेक्स्ट ईयरिंग पे जो कि मुझे बहुत सुंदर लगे और मेरे को छोटे वाले चाहिए थे तो मैंने ये ले लिए एंड दिस वॉज अगेन फॉर 50 रुपीज़ सो दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक यू कैन सी इसमें से ऑक्सीडाइज सा काम है इट्स लाइक वेरी वेरी प्रिटी एकदम प्रॉपर ऑक्सीडाइज सा लुक आता है एंड लुक हाउ क्यूट इट इज जस्ट मुझे तो बहुत ही सुंदर लगे ना मैं कह रही हूँ ना आधे तो इनमें से मैंने पहने नहीं है बट मोस्टली मैंने ले लिए बस ऐसे ही आई जस्ट couldn't होल्ड माई सेल्फ नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द रियल डील क्योंकि छोटे इयरिंग्स तो हो गए अब वी विल टॉक अबाउट द बिगर ones so I would want to start with this one look how big it is so this is how big it is and just look at the detailing it is huge और बड़े इयरिंग्स के साथ मेरा ये कंसर्न होता है दैट इट इज सो बिग कि कानों में दर्द हो जाता है बट दिस वन इज आई डोंट नो इट्स मेड ऑफ सम क्लॉथ this is made of some fabric and it is very lightweight like it is extremely lightweight I recently wore it and I was wearing it like good like 3-4 hours और मेरे कानों में दर्द नहीं हुआ there is a shot in this channel where I'm wearing it so you can see that and see the whole look and it was looking so pretty this one was for rupees 200 they initially quoted 300 or something but 200 में मान गए उससे कम नहीं कर रहे थे and it's a little sad but I found these rupees in another shop it's okay for I already ले लिए थे but look at how gorgeous they are I'm just trying to live with the fact that it's very pretty तो मेरे पैसे बर्बाद नहीं हुए Okay, so the next earring that I have is this one and इसको पहले आप सामने से देखो कितने खूबसूरत हैं ये They're so pretty they have like mirror work also like little chandwari detailing and I love the color like it's blue orange yellow like such pretty colors ये अभी तक मैंने पहना नहीं है because I haven't gotten a chance so this is what it would really look like and just look how gorgeous it is so इसका प्राइस इन्होंने कोट किया था 200 rupees but we got two तो वहाँ पे ऑफर था कि if you buy like 2 pieces so you will get it for 150 so हमने 2 पीसेस लिए थे we got this for 150 rupees which I think is a great deal क्योंकि बहुत सुंदर है ये और मैंने genuinely ऐसे डिजाइन कहीं नहीं देखे हैं so I think it's a great purchase so हम कहते हैं ना last but not the least I was definitely saving this one for the last and these are huge like huge earrings ये थोड़े heavy हैं I am not going to lie थोड़ा सा कान में दर्द हो जाता है because it's like proper pure metal so it is heavy but do you see this so I worn it once and I guess easily 10 people or more than 10 people told me that wow this is so pretty कहाँ से लिया so if you see it very closely I love the work on it ये थोड़ा सा वैसे कमर पे जो लगाते हैं लहंगा वहंगा के साथ वैसे लग रहा है बट बहुत ही सुंदर लगता है once you wear it and थोड़ा सा heavy है but beauty is pain guys so it is what it is so this was for 250 rupees 300 वो कुछ कह रहे थे but 250 में वो end में माने और मुझे बस चाहिए था तो मैंने ज़्यादा bargaining करी नहीं and I just got it so I'm done with earrings लेकिन अभी भी ज्वेलरी हमारी बची हुई है तो ये है कुछ ब्रेसलेट्स एंड चूड़ियाँ चूड़ियाँ तो नहीं बोलेंगे चूड़ी का एक ही सेट है बट एनीवेज so the first thing that I have is this so I'm wearing this bracelet you can see it's so gorgeous this is what it looks like and this was for 100 rupees and I think it was a steal deal just look at how pretty it is बहुत ही precisely बना हुआ है it is like green flowers हैं and ऐसे so I just needed something like for my hand mostly I wear watches
बट कभी कभार एक हाथ में होता है दूसरा वाला खाली होता है, सो आई जस्ट नीडेड समथिंग फॉर द अदर हैंड समटाइम्स. So I got this, and you will be shocked to know that this was only for 100 rupees. And I was like, wow, 100 rupees में इससे कम का कहीं नहीं मिलेगा, जनपथ में तो कहीं नहीं मिलेगा. So I was like, ठीक है, कुछ नहीं, कुछ bargaining नहीं, मैंने ले लिया चुपचाप. Then from the same stall I got these kadas. You can see दिस इज सो प्रिटी. ये ऐसे सेट ऑफ टू है, एक एक कड़ा, तो टोटल दो कड़े हैं. एंड यू कैन सी इसमें वो जो बेसिक कलर्स होते हैं, रेड एंड ग्रीन. सो यू कैन वेयर इट विद एनीथिंग एथनिक लाइक योर कुर्ताज और साड़ी. एंड आई फाउंड इट इन माई साइज. मुझे जनरली चीज़ें लाइक हाथ की रिंग्स और ब्रेसलेट्स मिलती नहीं अपने साइज की, चूड़ियाँ. सो बट मेरे को मिल गई. सो दिस इज़ गुड, and I am going to wear it like very very often. मैंने भी दिवाली पे भी पहना था सुबह सुबह. So it's perfect. So this was for 100 rupees if I have missed it in case. तो अभी तक आइडिया तो लग ही गया होगा कि ज़्यादा बार्गेनिंग मुझसे होती नहीं है और मैं करना पसंद नहीं करती. सो मोस्टली जो मैंने चीज़ें ली है ना, वो या तो मैंने 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ कम करवाई हैं, या फिर मैंने फिक्स प्राइस शॉप से लिए हैं. So I got this bangle set again. It was from the fixed price shop and this was for 100 rupees. So this is what it looks like. I don't want to spoil it, इसलिए मैं इसको नहीं खोल के दे रही हूँ, but this is what it looks like. ये चूड़ियाँ हैं, you can see ऐसे अलग अलग हो जाएगा सब कुछ, but this is very very cute. मतलब आधे एक हाथ में, दूसरे वाले दूसरे हाथ में. I can just wear them, and again it's in my size, so I'm shocked and grateful. Now last but not the least, I got a jewelry set. Went to the Diwali party, तब मैंने पहना था ये. So this is what it looks like, and this is a choker. This is the necklace, और साथ में जो earrings हैं वो भी exactly same दिखती हैं. And these are the earrings. साथ में बहुत ही प्यारी है, थोड़ी सी बड़ी है, आई थिंक मिड साइज है, बट दिस इज जस्ट परफेक्ट, एग्जैक्टली सेम लाइक द नेकलेस. एंड वैसे मेरे को कोई सेट की ज़रूरत नहीं थी, बट दिस वॉज फॉर 100 रुपीज़, सो आई जस्ट कुडंट डिनाई. सो नाउ वी हैव रीच द लास्ट सेक्शन. अब ज़्यादा चीज़ें बची नहीं है, सो आई नॉट वेस्ट लॉट ऑफ टाइम, और मैं बस डायरेक्टली चीज़ें दिखाऊंगी. So people know my obsession with bags, and I got like 2 bags. So this is the one. इसमें घुंघरू है इसलिए बज रहा है. This is the first bag. It's a very cute like boho looking bag. You can see मतलब इसमें ऐसे साइड में frills भी है. It's very janpath, like it's very very janpath. It's a pretty looking tote bag, और ऐसे इसकी frills हिलती रहती हैं. बहुत ही सुंदर लगती है ये. एंड दिस वन वॉज फॉर 400 रुपीज़, और इससे कम वो नहीं कर रहे थे. एंड आई हैव नो इश्यूज, आई वॉज फाइन बिकॉज इट्स अ बिग बैग, सो यू कैन लाइक कैरी अ लॉट ऑफ थिंग्स. नाउ नेक्स्ट अप आई हैव समथिंग दैट आई रियली लाइक्ड, और अभी तक मैंने पहना नहीं है, बट दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक. आई गॉट दीज चप्पल्स. While entering Janpath, you will find this store जिनके पास 200 रुपीज़ की ऐसी चप्पल्स हैं, एंड इसमें से पॉम पॉम्स लगे हुए हैं. दिस इज अगेन लाइक पीक जनपथ मटेरियल, फुल ऑन लाइक बोहो वाइब्स. और मेरे को लगता है मैं ये सारी चीज़ें पहन के एक आउटफिट क्रिएट कर सकती हूँ. लाइक आई कैन जस्ट वेयर लाइक दीज थिंग्स, और एक मेरा पूरा का पूरा लुक तैयार हो जाएगा. सो दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक. इट इज़ लाइम ग्रीन. सी दिस इज लाइम ग्रीन, राइट? लाइम ग्रीन, या. सो ये अभी तक मैंने पहना नहीं है बिकॉज इट्स अ लिटिल एक्स्ट्रा. यू कैन सी शेल्स लगे हैं इसमें, पॉम पॉम्स लगे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं. तो अभी तक मेरे को ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं ऐसा कुछ पहन के बाहर घूमूं. दिस वॉज फॉर 200 रुपीज़ विच इज़ अ गुड डील आई फील. और ऐसे ही करते करते वी आर नाउ इन द एंड ऑफ द वीडियो, एंड आई हैव जस्ट वन प्रोडक्ट विच आई एम करेंटली ऑब्सेस्ड विद. मुझे लगता है कि दिस इज द बेस्ट परचेज एवर. सो आई बॉट अनदर बैग, एंड इट इज़ द बिगेस्ट बैग एवर. And look at this. So so this is what we got. So this is what it looks. ये back है और ये है इसका front, and it is so pretty. मतलब मैंने ऐसे metallic clutches देखी हैं, like big clutches, but I was just so drawn to like this little one. I don't have even a single like small bag, and this is my first ever. So I think it's a good deal. अब मुझे ना याद नहीं है कि हमने कितने का लिया था, but I think we got it for 250 rupees, but you can easily like get it for 200 rupees in Gujarati Lane, क्योंकि हमने ज़्यादा पे करे हैं, ठीक है. But we bought like 2 pieces, और yeah, we got it for 250. Yeah, we paid 500. Yeah, and
me and my friend, like I know she's definitely watching it. हमने इतनी सारी चीजें सेम ली है that we can literally twin. We have the same earrings, we have the same bag, even the same top. We will be twinning soon. This is what the bag looks like and it is so pretty. मतलब अभी मैं recently इसको 2-3 जगह लेके गई हूँ and everyone is just like इसमें आता क्या है, इसमें क्या सामान आता है. So I just try and prove that you can fit a lot of things in it. चाहे नहीं होती but I just make it a point to like highlight that what इसमें बहुत सामान आता है. So it is what it is. And that brings us to the end of this video. If you liked watching this video, don't forget to actually like it. And I will see you very soon in my next video. तब तक के लिए subscribe कर लेना and bye bye.